एवरीवन, बच्चों हम 12th अकाउंटेंसी का महाराष्ट्र बोर्ड के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। यस, एज वी ऑल नो क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 20 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो हमें पता है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए आज हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपने बहुत अच्छे से कर लिए ना तो ये 20 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बहुत अटेंटिवली ये लेक्चर देखना बच्चों, बिकॉज अगर गलती हो गई तो पूरा 1 मार्क चला जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मार्च 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, फाइंड द ऑड वन। ओके, अभी ऑड वन आउट हमें बस फाइंड आउट करना है। नंबर 1, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी शेयर्स। अब बताइए व्हाट इज द ऑड वन आउट हियर? इक्विटी शेयर्स, बिकॉज बाकी सब कैपिटल के टाइप्स है, राइट? सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, राइट? बट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इज अ टाइप ऑफ अ शेयर, राइट? सेकेंड, बिल्डिंग, बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, सो दैट इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड एंडोर्सिंग ऑफ बिल। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बच्चा हमने देखा है दैट जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसे हम 4 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले वी कैन रिटेन द बिल, और वी कैन डिस्काउंट द बिल, और वी कैन एंडोर्स द बिल, और वी कैन सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे जो तीनों हैं दोज आर करेक्ट, बट नोटिंग ऑफ द बिल इज द ऑड वन आउट हियर, राइट? नेक्स्ट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री रिसीट्स। तो पहले 3 जो है ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये क्या है? दीज आर एक्सपेंसेस, बट सन्ड्री रिसीट्स मतलब इनकम है, सो दिस इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स एसेट एंड कैपिटल लाइबिलिटी। तो यहां पे वापस इन्वेस्टमेंट विल बिकम आर ऑड वन आउट। नेक्स्ट, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? लेट अस रीड। फर्स्ट वन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब हमने देखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स में वहां पे तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, सो दिस यू डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। अब जो करंट अकाउंट होता है बच्चों पार्टनर्स का, वहां पे डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, isn't it? So again this is disagree. A bill of exchange is a conditional order. बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में हमने देखा है इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज डिसअग्री। नेक्स्ट, retiring partner is entitled to share in the reserve fund and accumulated profit, right? This is correct, so agree. Next, on dissolution, cash or bank account is closed automatically, right? हम यही देखते हैं ना डिसोल्यूशन में एट द एंड अपने आप ये टैली हो जाता है, सो अगेन यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। नो यहाँ पे एक गलती होने के चांसेस है, सिली मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों, हमें पूछा अग्री डिसअग्री और हमें आदत होती है ट्रू और फॉल्स लिखने की, तो यहाँ पे हम अग्री के बजाय लिख के आ जाते हैं ट्रू और डिसअग्री के बजाय लिख के आ जाते हैं फॉल्स। ओके, सो प्लीज डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक, रीड द क्वेश्चन। पूछा क्या गया है? अग्री डिसअग्री, तो लिखते वक्त भी आपको अग्री या डिसअग्री ही लिखना है, डोंट चेंज द वर्ड्स। गेटिंग इट? ऑलराइट, आगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया है रीराइट, तो आपको बस एक वर्ड लिख के नहीं आना है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना होता है, ठीक है? फर्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। कौन से अकाउंट में हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, interest on loan advance by the partner to the firm is allowed at the rate of dash. This we have studied chapter number 1. This is 6%. Next, if an asset is taken over by the partner, dash account is debited. अगर पार्टनर लेके जाता है बिजनेस से एसेट तो हम किसे डेबिट करेंगे?
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, the balance of capital account of a retired partner is transferred to his dash account if it is not paid. Transferred to his loan account. Next, income and expenditure account is a dash account. हमें पता है income and expenditure is a nominal account because वहां पे सारे expenses और incomes होते हैं, so it is a nominal account. Next, write one word, term or phrase as a substitute for each of the following statements. Number 1. Tally software is classified into this category. So this answer is mercantile. Okay. Next, partnership agreement in written form. क्या कहते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं partnership deed. Partnership deed. Next, an asset which can be converted into cash immediately. What are such assets called? हम उन्हें कहते हैं लिक्विड एसेट्स या फिर उसे हम क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द डिजीज्ड पार्टनर, उसे हम कहते हैं ही इज द लीगल हायर या फिर ही इज द एग्जीक्यूटर या फिर उसे हम नॉमिनी भी कह सकते हैं. ओके, आगे, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर में अगर डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से, सो दिस बिकम्स अ डेफिसिट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ईयर. अगस्त 2023 के क्वेश्चंस है हमारे सामने. लेट्स रीड. 1. राइट वन वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब क्या है? दिस इज अ ग्रॉस लॉस, तो यहां पे हमें लिखना है gross loss. The receipts which are not recurring in nature, जो बार बार नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं capital receipts. Next, capital employed into normal rate of return upon 100. This gives us normal profit. Next, fees charged by notary public for getting the fact of dishonor noted. क्या कहते हैं हम इसे? Noting charges. Next, the person who purchases share of a company, उसे हम कहते हैं shareholder. Okay, आगे. Complete the following statements. Number 1. Return outwards are deducted from dash. रिटर्न आउटवर्ड है तो किससे डिडक्ट होंगे? परचेजेस से. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट. क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट्स? इट इज अ रियल अकाउंट. कैश से रिलेटेड है, सब रियल अकाउंट है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, प्रॉपरली लिखना है आपको ये वर्ड. Next, making payment of the bill before the due date of the maturity is known as dash. इसे हम कहते हैं retirement of the bill. Retirement of bill. Next, benefit ratio is new ratio minus dash. So new ratio minus old ratio gives us benefit ratio या gain ratio. Okay. Answer in one sentence only. When is partner's current account opened? हम कब current account open करते हैं? जब हम fixed capital method follow कर रहे हैं. So let us see कैसे लिखना है हमें. When the partnership firm adopts fixed capital method, it opens and maintains current account for each partner. Simple. Okay. Next. What is surplus? Surplus क्या है? जब भी हमारा income is more than the expense. See, excess of income over expenditure in not for profit concern is termed as surplus. All right. Next, what is sacrifice ratio? The ratio which is surrendered by the old partners in favor of newly admitted partner is called sacrifice ratio. देखिए कौन सरेंडर कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, तो हम कहेंगे दिस इज अ सैक्रिफाइस रेशियो. आगे,
Who is called insolvent person? देखिए insolvent person, a person whose capital account shows debit balance and who is not in a position to meet his capital deficiency even from his private estate is called insolvent person. Even if they sell off their private property, they will not be able to pay off their debts. तो हम उसे कहते हैं insolvent. Okay? And last, what is computerized accounting system? CAS means computerized accounting system which helps business firms to implement accounting processes and make it user friendly with automation. User friendly, और जो automation use करके accounting processes हम follow करते हैं उसे हम कहते हैं computerized accounting system. Okay? देखिए कितने simple one liners आपको बस लिखने हैं, लिख दिया मिल जाएगा 1 mark. Next, select the most appropriate alternative from the following and rewrite. देखिए again, rewrite the sentence. तो आपको पूरा sentence लिखना है, जो blank आप fill कर रहे हैं उसे लिखिए and then एक उसके अंडर line बना दीजिए. ठीक है? The Indian Partnership Act is in force since 1932. Not for profit organization is called dash organization. Service. Next, Rishi, Ratna and Ruchira are sharing profits and losses in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. If Rishi retires, Rishi मतलब ये, then their new ratio will be dash. New ratio क्या रहेगा अभी देखियो, Rishi has retired. Okay, so 3/10 is to 1/5 will be the new ratio in case of any absence of any other information, right? तो अभी denominator common कर लेते, it will be 3/10 is to 1 multiplied by 2 and 5 multiplied by 2. So this comes to 3/10 is to 2/10. तो हम इसे लिख सकते हैं 3:2, right? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा B. आगे, assets and liabilities are transferred to realization account at their dash value. Realization में जब हम ट्रांसफर करते हैं, we transfer at their book value. Answer D. Next, common size statement requires dash. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें एक कॉमन बेस की जरूरत होती है. आंसर A. Okay, let's move to March 2023 now. Write one word, phrase, term which can substitute each of the following statements. Number 1, credit balance of profit and loss account. क्या कहते हैं हम उसे? Profit and loss account का credit balance है तो that will be net profit. यहाँ पे भी be careful बच्चों. Okay, कभी ट्रेडिंग अकाउंट का पूछा जाता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो बी केयरफुल, ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है. ऑलराइट, नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, उसे क्या कहेंगे हम? स्पेसिफिक डोनेशन. नेक्स्ट, द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू. नाउ अगेन बी केयरफुल, क्या पूछा है? ओल्ड फ्रॉम न्यू, मतलब दिस इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये पूछा गया है बच्चों. यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है. प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. यू आर डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू, तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, दिस इज व्हाट? दिस इज गेन रेशियो. ओके, ऑलराइट. आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं. रियलाइजेशन expenses. Okay, next, Tally software is classified into this category. देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी देखा था, this is mercantile. That's the reason you have to go through the objective types of the past year questions because sometimes there is a possibility that वो repeat हो सकता है question. All right. Next, calculate 12.5% depreciation on furniture. 2,20,000 for 1 year, इसका 12.5% हमें कैलकुलेट करना है. So this will be 12.5% of 2,20,000. This gives us 27,500. Next, on 10,000 for 6 months, 10,000 पे 6 months के लिए देखिए 10,000 multiplied by 12.5% and this is for 6 months. कितना आ रहा है ये? This is 625. Okay, आगे, library books is dash minus 10% depreciation is 5,000. That gives us 45,000. हमें लाइब्रेरी बुक्स की कीमत निकालनी है बच्चों. देखिए क्या बोला है? लाइब्रेरी बुक्स डैश लेस 10% depreciation
5,000. अभी 10% किस चीज का होता है? 5,000 50,000 का 10% होता है, तो यहां पे आंसर आएगा 50,000. देखिए 50,000 minus 5,000 is 45,000. Okay. Next, Apte and Bhate are sharing profits and losses in the ratio 3:2. If Kate is admitted at 1/4 share, then calculate new profit sharing ratio. कैसे करेंगे calculate? Balance of 1. Balance of 1 will be 1 minus 1/4. That gives us 3/4. Right? तो Apte and Bhate का होगा 3/4 multiplied by 3/5. This is 3/4 multiplied by 2/5. This gives us 9/20 and 6/20. Right? Kate का 1/4 है, तो Kate के लिए भी हमें 20 डिनोमिनेटर चाहिए, so multiplied by 5 कर देंगे. 5/20. So 9:6:5 is our answer. Okay? आगे. Ganesh draws a bill for 40,000 on 15th January for 2 months. He discounted the bill with the Bank of India at 50% on the same day. Calculate amount of discount. तो discount की amount आएगी 40,000 का 15% and for how many months? 2 months. कितना आ रहा है ये? This comes to 1,000. Okay. Next, from the following information, calculate current assets. कौन से अभी current assets? Debtors, yes. Creditors, no. Bills payable, no. Stock, yes. Loose tools, yes. Bank overdraft, no. So 60 plus 30 plus 10, that gives us 1 lakh. So current assets is 1 lakh. All right. आगे. Do you agree or disagree with the following statements? Number 1, partnership is an association of 2 or more persons. Right. Agree. Not for profit concerns do not prepare balance sheet. Disagree. Retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit. Again ये disagree है ना, retiring partner को तो मिलना चाहिए share. Next, dissolution takes place when relation among the partners comes to an end. Right? So this is agree. Authorized capital is also known as nominal capital. Agree. Select the most appropriate alternative from the following and again rewrite. तो पूरा sentence लिखेंगे हम. Maximum number of partners in a firm are dash according to Companies Act. So this is 50. आगे income expenditure account is a dash account. अभी हमने देखा था nominal account. If asset is taken over by the partner, dash account is debited. देखिए कैसे repeat होते हैं questions. So that is the reason you have to ensure that you go through the previous year questions. बहुत बार repetition होता है बच्चों. Asset is taken over by the partner, capital account is debited. Next, death is compulsory dash. Death is compulsory. Retirement. And last, person on whom a bill is drawn is called a, जिसके ऊपर हम draw करते हैं उसे हम कहते हैं drawee. So our answer is A. Let's move to the next year. July 22 में है. Let's read. Do you agree or disagree with the following statements? Number 1, financial statement includes only balance sheet. Agree है क्या? No, disagree. The person in whose favor the bill is endorsed is called endorsee. Correct. So agreed. Next, retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit. देखिए ये कितने बार twist कर करके ये सवाल पूछा गया है. So this is disagree. Next, income and expenditure account is real account. No, it is a nominal account. Disagree. Partnership firm is a trading concern. So this is agree. Next question. Select the most appropriate alternative and rewrite the statements. Okay. A proportion in which continuing partners get the share of retiring partner. जब retirement से related है ये. Retire जब होता है तब कौन सा share हम use करते हैं? That is known as gain ratio. Right? आगे. Partnership is completely dissolved when the partners of the firm become insolvent. The person on whom the bill is drawn is called dash. जिसके ऊपर हम draw करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम drawee. Next, liability of partners is dash. Liability of partners is unlimited. Next, Ajay and Vijay are 2 partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to admit Sanjay for 1/5 share
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डैश. ओके, सो बैलेंस ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 minus 1/5, that is 4/5. सो अजय, विजय एंड संजय. अजय का रहेगा 4/5 multiplied by 3/5. This is 4/5 multiplied by 2/5. Okay, so this gives us 12/25, 8/25. एंड संजय का है 1/5 शेयर. इसे हम डिनोमिनेटर्स कॉमन कर लेंगे, 5/25. So our answer will be 12:8:5. Okay, please remember denominators यहाँ पे आपको कॉमन करने हैं. सी कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं आप. ओके, सो 12:8:5. तो हमारा आंसर है ए. फाइंड दी ऑड वन आउट. रिजर्व फंड, बैंक लोन, बिल्डिंग एंड कैपिटल. सो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? बिल्डिंग, बिकॉज बाकी जो तीनों है वो लाइबिलिटीज है. नेक्स्ट, एडमिशन फीस रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. अब बच्चों बाकी जो तीनों है वो रेवेन्यू रिसीट्स है, लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है दैट इज अ कैपिटल रिसीट, वो बैलेंस शीट में दिखता है, राइट? सो दैट इज द ऑड वन हियर. पोस्टेज, स्टेशनरी, डिविडेंड रिसीव्ड एंड एडवर्टीजमेंट. अगेन बाकी सारे एक्सपेंसेस है, डिविडेंड रिसीव्ड बिकम्स आवर इनकम. बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट्स. ओके, सो ये जो तीनों है ये एसेट है हमारे. ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी. नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैंक अकाउंट. तो बाकी सारे लेजर्स है, बैलेंस शीट इज द ऑड वन आउट हियर. ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज, इनकम ज्यादा है तो हम कहेंगे सरप्लस. डैश शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. कौन से? इक्विटी. Next, deceased partners executors loan account is shown on the dash side of the balance sheet, liabilities side. Next, dash is the set of programs that directs the computer to perform desired task. ये हो जाएगा software. And last, revaluation account is also known as dash. It is also known as profit and loss adjustment account. देखिए ये भी repeat हुआ है question. So please ensure that you go through these PYQs. That is the reason that I have made these बच्चों, because repetition देखने मिलता है हमें exams में. Alright? And now last question is March 2022. Let's read. Attempt all the following sub questions. First, select correct options and rewrite the statements. First one, to find out net profit or net loss of the business, dash account is prepared. Net loss या net profit कहाँ से मिलता है? Profit and loss account. Next, from the financial statement analysis, creditors are specially interested to know dash. Creditors को क्या चाहिए? जो उनका पैसा है वो उन्हें वापस मिलना चाहिए बस, और उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे बिजनेस से. करेक्ट? तो क्रेडिटर्स को ये जानना जरूरी है दैट हमारे पास उतना पैसा है या नहीं. और ये कैसे पता चलता है? लिक्विडिटी से. सो आंसर होगा ए. ऑलराइट, आगे, डेथ इज अ कंपल्सरी डैश. डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट. नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months ऑन 23rd November विल बी डैश. देखिए हम वर्किंग नोट बना लेंगे. 23rd November 2019 2 months का बिल है, सो ईयर चेंज हो जाएगा 23/1/2020. अगेन इसमें 3 ग्रेस डेज, सो 26/1/2020. लेकिन 26 क्या है? दिस इज अ नेशनल हॉलीडे, एंड व्हेन देयर इज अ नेशनल हॉलीडे तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस वर्किंग डे पे. तो प्रीवियस वर्किंग डे हो जाएगा 25th Jan 2020. ओके, आगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डैश थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डिक्रीज जब भी होता है एसेट की वैल्यू में तो हमारी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट. तो वी आर डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलराइट, राइट वन वर्ड, टर्म और फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट है, सो दिस विल बी ग्रॉस लॉस.
नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अभी हमने ऊपर भी देखा था, या फिर यू कैन राइट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आएगा, ये याद करिए, मैंने आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म दिया है, ऑन सैक्रिफाइस नो गेन। ऑन मतलब ओल्ड माइनस न्यू, ये सैक्रिफाइस का फॉर्मूला हो जाएगा, और गेन का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। सो ऑन सैक्रिफाइस नो गेन इज व्हाट यू हैव टू remember. So this is old minus new on. So this becomes my sacrifice ratio. Next, officer appointed by the government for noting of dishonor of bill. This is the notary public. Next, donation received for a specific purpose. इसे हम कहते हैं specific donation. Next, answer the following questions in only one sentence. What is a legacy? देखिए किस तरह आपको लिखना है. A gift to not-for-profit concern as per will of the donor after his death is called legacy. क्या होता है ये? It is a gift. किसे दिया जाता है? Not-for-profit concern को as per the will of the donor after his death. Okay? उसे हम legacy कहेंगे. Next, what is CAS? अभी हमने ऊपर देखा था computerized accounting system which helps business firms to implement accounting processes and make it user friendly with automation. Next, who is called insolvent person? ये भी हमने देखा था. Insolvent person कौन होता है? जिसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा and who is not in a position to meet his capital deficiency even from his private property is called insolvent person. Okay? आगे, What is reserve capital? Reserve capital क्या कहते हैं हम? Reserve capital is that part of subscribed capital which is reserved to be called up only at the time of liquidation of the company. मतलब capital का ही हिस्सा है, लेकिन हम liquidation के वक्त ही called up करेंगे, इसे हम कहते हैं reserve capital. Alright? And last, revaluation account क्या है? देखिए, an account opened for recording changes in the value of assets and liabilities on being revalued to a certain profit and loss on revaluation is called revaluation account. क्यों ओपन करते हैं हम? जो भी चेंजेस है एसेट्स और लाइबिलिटीज में वो रिकॉर्ड करने के लिए, और वो चेंजेस क्यों रिकॉर्ड करने हैं? सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. ओके, आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप. इसे हम कह सकते हैं इट इज एन आर्टिकल, या फिर इसे हम कहेंगे इट इज एन एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये क्या है? इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राइट? सो दिस प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपको पूरा लिखना है. रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस. नेक्स्ट, न्यू रेशियो माइनस डैश गिव्स अस ओल्ड रेशियो. तो हमने क्या देखा था? ऑन सैक्रिफाइस नो गेन. नो गेन का क्या फॉर्मूला है? नो न्यू माइनस ओल्ड. नेक्स्ट, कैश receipts which are recurring in nature are called dash. They are called revenue receipts. With this we come to an end of this lecture बच्चों. I hope आपको ये बहुत ही अच्छी से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ गए हैं. In case you have any doubt, feel free to ask in the comment section. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.